Dear students, it is the fifth video for week 15, lecture 30. In this video, we will talk about Karl Marx or Marx theory of revolution. Marx theory of revolution. Dear students, as in the video 4, I expressed that Karl Marx established his theory of revolution on the theories of Adam Smith and Hegel's. Clear? And the main point of Karl Marx theory is that all the differences in the poor and the rich are due to the unequal, the unjust distribution of matter mean wealth, and just because of the wealth distribution, those who have more, they become masters and they enslave the other human beings. Clear? And those masters then decide that what kind of system of government should be used for these slaves. Clear? They decide their education system. They enjoy the most of the luxuries of their lives, whereas the people remain the same for generations and generations. Clear? So Karl Marx in his ideologies is the champion of socialist theory. Socialist theory means that he wants that all and everything, clear, should be under the control of all the people collectively rather than with the few people. Clear? In his book Communist Manifesto, he has expressed his theory of revolution in detail. Clear? He gives, he means chalks out, or he gives a detailed framework, clear, a detailed guidance and framework to the laborers, to the workers, to start their political and social struggle against these capitalists, industrialists, and landlords, and retake, possess all their belongings and eradicate all their education system and their values and construct a equality based uh, system of government where the people may have all the rights and the wealth should be distributed equally. In his way, he says that the poor, the laborers, proletaries mean the workers, they should fight in all fronts, in political fronts, and even if they want to have physical fire, कि वो चाहता है कि ये जो मजदूर हैं ये जमहूरी तरीके से कोशिश करके अपनी कोई पार्टी बनाकर हुकूमत में आए और फिर इस निज़ाम को खुद इसके मालिक बन जाएं, या फिर ये अपनी कोई मुसल्ला पार्टी बनाएं और फिर उसके ज़रिए हुकूमत का तख्ता उल्टे, जिसे वो रेवोल्यूशन कहता है, और फिर they control it. So Karl Marx and the followers Lenin and others who led and toppled Tsar and established their
revolution in Russia, they followed these two things. Okay, he writes in his book, The Communist Manifesto, that for the first step, पहला स्टेप वो कहता है कि भाई हुकूमत मामलात में, मजदूरों को हुकूमती मामलात में हिस्सा लेना चाहिए और जमहूरी तरीके से इंतखाब लड़के कामयाबी हासिल करें और ख़ुद हुक्मरान बन जाएं। अब इस मकसद के लिए जमहूरी तरीके से कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि एक सियासी जमात कायम की जाए, आम इंतखाबात में उस सियासी जमात को वोट मिलें और फिर इस तरीके से एक मजदूर हुकूमत का जो इनकलाब है वो सामने आएगा। कार्ल मार्क्स के, if we critically evaluate Karl Marx theory of revolution, so from two aspects. Number one, Karl Marx wanted that the socialist revolution should be came into reality and developed step by step. Clear? He believed that this unjust capitalist system shall be eradicated by itself, and soon the socialist system will replace it. Clear? Number two, पहले तो ये यकीन रखता है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के अंदर अकल आएगी, शऊर आएगा, समझ आएगी, तो वो खुद इस सिस्टम के खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो जाबराना और शहनशाहाना तरीका की ज़िंदगी है ये ख़त्म हो जाएगा। नंबर टू, he says if this strategy is not working well, then the theory of coercion and theory of power should be used. वो कहता है अगर इनकलाब हासिल करने के लिए ये तरीका नहीं हो सकता तो फिर फ्रांस, इनकलाब फ्रांस की तरह, जिसमें लोगों ने अपने बादशाहों को मार दिया, जागीरदारों को मार दिया, जिससे जिस्म से खुशबू आती, जिसका रंग थोड़ा बेहतर होता, दे थिंक इट दैट दिस इज़ प्रिविलेज्ड पर्सन, तो उसको मार देते थे। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि फिर इस मकसद के लिए अगर अमन जमहूरियत के तरीके से इनकलाब ना आ रहा हो तो फिर जबर और तशद्दुद का तरीका इख्तियार किया जा सकता है। एंड ही बिलीव दिस, बट दिस शुड बी डन इन एक्यूट फॉर्म, ये एक्यूट फॉर्म में होना चाहिए। ही believes this, that the mentality and needs of a rich person or a capitalist are different, whereas the need of the laborers are different. Fine. In both ways, कार्ल मार्क्स को अगर हम देखें तो पहली बात वो कहता है कि जमहूरी तरीके से कोशिश करें कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो, आप लोगों को एजुकेट करें और ख़ुद हुकूमत में आ जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनकलाब लें और तशद्दुद इनकलाब लें। And interestingly, these two systems have been exercised, but the successful one is the one where terror and तशद्दुद has been clear. फ्रेंच रेवोल्यूशन में तशद्दुद है, रशियन रेवोल्यूशन में भी 2-3 करोड़ इंसान मारे गए। Even if you see the French the revolution and Chinese revolution, तो वहाँ पर भी बेशुमार लाखों इंसान वहाँ पर मारे गए। Whereas the theory of by politics, अगर आप political theory देखें of the revolution, तो PPP की गवर्नमेंट जो है आपके यहाँ, this is the political system कि भाई एक पार्टी बनाए फिर वो लोगों में आए, but you find it still there is the element of terror, there is the element of fighting and
क्वेश्चन एंड पुलिस पावर, उसमें भी पुलिस पावर का एलिमेंट मौजूद रहा है। इवन द भुट्टो वाज द चैंपियन, बट भुट्टो इज कॉल्ड द सिविल डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। One time he became the civil dictator of Pakistan, just like the Hitler used to be of his party, Nazi party. Fine. So this is the theory of the uh, revolution. And now the purpose of theory of the revolutions Marx का मकसद क्या था? Number one, all the government departments and production should be controlled, plus all the sources of the national wealth and income, departments like bank, railway, industry, factories, lands, they should be controlled by the government of the laborers. ये मजदूर गवर्नमेंट जो है उसे कंट्रोल कर ले। नंबर टू, द वेल्थ ऑफ बूर्जुआ, बूर्जुआ कहते हैं कारोबारी तबका, ऑनरेबल उमरा, जो उमरा हैं, रईस हैं, उनकी जो दौलत है, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनको कब्ज़े में ले लिया जाए और फिर उसको मुल्क के अंदर बराबर तकसीम कर दिया जाए। क्लियर? और इस तरीके से सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किया। यू फाइंड दिस इज देयर। व्हाट डिफरेंस इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? यही एक सिस्टम जो था ना, ये जो बात अभी मैंने की है, बूर्जुआ से वो जागीरदारियाँ ले ली जाए। तो हिंदुस्तान में नेहरू ने जागीरदारियाँ ख़त्म कर दी, बड़ी बड़ी जागीरें और जो बड़े बड़े महल्लात थे वो ले लिए और उसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जम कर दिया। जबकि पाकिस्तान में कायदे आज़म ये करना चाह रहे होंगे शायद, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया। इसी वजह से पाकिस्तान में असम्बली को किंग्स पार्टी कहा जाता था। क्लियर? नाउ द स्टेप्स ऑफ द रेवोल्यूशन बाय द Karl Marx. Karl Marx says this, that a revolution doesn't mean simple thinking. It means that once you have thought about an innovative revolutionary idea, do implement it by either means. Use it a social democratic source or use it to your physical power. But in all situations, that revolution have to be successful and implemented. Okay, he has 3 steps for the revolution. Clear? He wants number 1 कि जो इनकलाब के दुश्मन हैं उनकी जायदाद को ज़ब्त कर लें, उसकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लें। कौन कौन से? नंबर 1, the enemies of the revolution, the opposition in the revolution, and the traitors within the party, कि जो लोग इनकलाब के दुश्मन हों, जो फिजिकली लड़ना चाहते हों, दूसरे जो इनकलाब के मुखालिफ हों, और तीसरे जो आपकी पार्टी के अंदर गद्दार बन जाएं। Number 2, that all the government collection and taxes should be decided according to the circumstances, so that the nation wealth should be distributed equally and justifiably among all the people. Okay, next in this same, that those people who have more income, they should pay the more taxes. Clear? This way, those who have more income, they should pay the more taxes. It means that the wealth should not be accumulated with the same people. Okay, after the revolution, कि जब revolution आ जाए तो मजदूर हुकूमत को चाहिए कि तमाम ज़राए पैदावार से सरमादारों को निकाल दें। ठीक है?
और उन तमाम तरीके पैदावार को कंट्रोल कर लें जो सरमायादारों के पास हो। इनकलाब को कामयाब करने के लिए मजदूर हुकूमत को चाहिए कि तमाम तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा कर दे और तालीमी निज़ाम में सबको मुसावी रखा जाए और तालीम मुफ्त दी जाए। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में अगर आप देखें, पुराने ज़माने में क्या था, एचिसन कॉलेज है, फलां कॉलेज है, जैसे आपके पास एचिसन कॉलेज है लाहौर में, पेशावर में पिंडी में गॉर्डन कॉलेज बना, पेशावर के अंदर एडवुड कॉलेज बना, इसी तरह डिमान मरनसी कॉलेज शाहपुर में बना। तो ये जागीरदारों के लिए कॉलेजेस बने थे कि ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश फॉर द पीपल। क्लियर। फिर देयर वर टू सिस्टम, देसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड स्कूल एंड अदर्स। अब भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, द डिफरेंस इज द सिमिलर। बहुत ज़्यादा तबकाती तकसीम है। मिसाल के तौर पर टू मेन, इंग्लिश मीडियम्स एंड उर्दू मीडियम। तालीम में देखें, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। 90% लोग इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करते हैं। ठीक है। उर्दू मीडियम में आगे फिर मदरसे के हैं, रेगुलर स्कूलिंग है। अच्छा, फिर एक और निज़ाम तालीम चल रहा है, बोर्ड देखें, एक फेडरल बोर्ड है, एक जनाब अली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं। फेडरल बोर्ड की पॉलिसीज इक़दाम डिफरेंट है। फिर आप देखेंगे एक मैट्रिक का निज़ाम तालीम चल रहा है और एक ओ लेवल्स और ए लेवल चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आर्मड फोर्सेस and a very few universities are controlled by the general public. Clear? And you find a list of differences and they all are being generated just by one education system. ये तमाम differences हैं, ये education system से ही generate किए जाते हैं। And this is how they have made the classes. जो मदरसे के लोग हैं, government do not provide them facilities. They are self-controlled and self-driven. जब ज़रूरत पड़ती है उनको तालिबान के नाम पर आगे पीछे यूज़ कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को मार देते हैं। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले लोग जो हैं वो हद करेंगे तो को ग्रेड 17 तक पहुंच जाएंगे। वो क्लर्क तबका हमने बनाया हुआ है, वही हम जैसे लोग जिन्होंने एजुकेशन में ये कर। ठीक है जी। ओ लेवल ए लेवल जिन्होंने करना है वो हाई प्रोलिफिक तबका, उन्होंने बाहर जाना है and they have to come back as administrators and others. Armed forces have designed that their people have going to this direction, and this is a huge difference. And this is what Karl Marx says, that eliminate all the differences created by the education system for the favor of these social differences. सरमायादारा निज़ाम के खात्मा के लिए all the traditional things should be abolished. Clear? And the labor government, proletariat government, should give special attention on agriculture and agriculture production so that the hunger should be controlled in the country. Clear? So, in short, Karl Marx's theory of socialist revolution is wonderful, and it has attracted a huge population of the world. China, Russia, Cuba, clear, South Korea, North Korea, and many other countries, they are the direct practicing of these social events, these social theories. In Pakistan, India, and other world, the socialist thoughts are implemented. ये को भी आप इमरान खान का theory of what we say accountability, clear,
Bhutto's theory of roti kapda and makan, fine, and all these theories that you find, they are impressed by the socialist theories. And the fighting between the world is just on based on two camps, capitalists and the socialists. Capitalists are led by America and West, and the socialists are dealt by dealt by China and Russia. Pakistan, India, and other countries, they are just their forefront fighters. Clear? Thank you very much. Hope you have understood.